Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am your geography teacher from California Public School, Mrs. Manpreet Kaur. Hope students all of you are fine at your home, and I request you to stay at your home and be safe, be healthy. Yes dear students, in the previous video we have to start our next chapter, weather instruments, and today we have to discuss about the first weather instrument, that is the thermometer. For which purpose we have to use a thermometer? We have to use a thermometer to measure the air temperature. Which we have to use? To measure the air temperature. The temperature of the air is measured with the help of the thermometers. कहते एयर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज लेवल ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस. Today, different types of thermometers we have to use to measure the temperature. One, clinical thermometer that we have to use to measure the body of temperature of the body. Second, to measure the highest and lowest. Highest सबसे ज़्यादा, lowest सबसे कम. In 24 hours temperature, a U-shaped thermometer has been developed. Just like it. U-shaped. And it is called the 6 maximum and minimum thermometer. The unit of measuring the temperature in our country क्या है? Degree Celsius we have to use. Most of the thermometers are form of closed glass tube. कहते जो mostly thermometers में glass tubes होती हैं, which has been expand bulb at the one end. कहते एक end पर उसके bulb होता है जो expand हो जाता है. The tube and the bulb are filled with liquid such as mercury or alcohol. कहते जो सेंटर वन है बल्ब है वो मरकरी और या अल्कोहल के साथ फिल्ड होता है. Then before sealing the other end of the tube, the air in the tube should be removed by heating it. The bulb of the thermometer, when it contact with the air, gets heated or cooled and causes the rise and the fall of the mercury in the bulb. कहते उसके बाद जब उसको थर्मामीटर को हम एयर के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, या तो हीट ज़्यादा होती है या कम होती है, और इससे क्या है जो मरकरी है वो ऊपर नीचे या राइज या फॉल होती है. Celsius or Fahrenheit scale can be used to measure the rise and fall in the mercury level inside the tube of the thermometer. कहते इनसाइड जो थर्मामीटर ट्यूब है उसके अंदर मर्करी लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए वी हैव टू मेजर द सेल्सियस और फारेनहीट. सो ऑन द सेल्सियस स्केल्स द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग इज 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री. मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द 100 डिग्री सेल्सियस. सो टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर इन 24 आवर्स द यू शेप्ड 6 maximum and minimum thermometer used. कहते 24 hours में हमने जो maximum और minimum temperature we have to record. From that where we have to record from the U-shaped 6 maximum or minimum thermometer. The tubes of U-shaped thermometer contain 2 small metal makers which are pushed upward by the mercury in the tubes. कहते ऊपर की तरफ जाते हैं mercury में. Then the metal markers can be set in the furthest point touching of the mercury to help the magnet. When the temperature of the air rises, mercury in a U-shaped expand. कहते जब temperature rise हो जाता है काफ़ी ज़्यादा तो mercury expand हो जाती है. It pushes the melt maker upwards. So these melt makers can't be come back. कहते वो मेल्ट मेकर्स वापस नहीं आते अगेन बाय अ मैग्नेट जब तक मैग्नेट नहीं होती. थर्मामीटर विच शोज द मिनिमम टेम्परेचर यूज्ड अल्कोहल इन प्लेस ऑफ अ मर्करी. कहते जब व्हेन दे हैव टू रिकॉर्ड द मिनिमम टेम्परेचर दे हैव टू यूज द अल्कोहल इन प्लेस ऑफ द मर्करी. इट गिव्स द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे. और उसके बाद हमें क्या मिनिमम टेम्परेचर मिल जाता है. नेक्स्ट
The thermograph record the changes in the temperature. कहते जो thermograph है that we also use to record the changes continuously and plots in on the graph paper to measure the temperature of air accurately. और कहते graph paper के ऊपर they have to be print out. The thermometers should be kept in the Stevens screen which can protect the thermometers direct sunlight. कहते स्टीवनसन ने क्या कहा था कि हमें थर्मोमीटर्स को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होगा. इन द मैप ऑफ आइसोथर्म्स आर यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. हमें शो करते हैं टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. So for that we have only thermometer. Hope all of you have listened it carefully, and after that read from your book and do the assignment related to this video. So take care. Bye bye.